This is a very unique technology, and you can see it in a lot, also in a lot of greenhouses, closed greenhouses and advanced greenhouses around the world. This is a big energy saver because it uses the humidity also to heat the greenhouse. So this is a Dryger, this is a Israeli startup company. So we control the CO2, we control the humidity, but we want also to control the soil. So this is an example, not in substrate, but in soils, how we can get a better vision of what happens around our root environment. This is a Cropex, this is an irrigation startup company that developed this sensor, and it knows not only to give you the relative humidity in the soil, it knows also to tell you how much your fertilizer and your water is leaching down under the soil surface. So this is automatically controls your irrigation system. This is a system we developed in Haifa. This is connected to soil extractor in the soil, and it sucks the soil solution, analyzes automatically ECPH and some other nutrients such as nitrate, and automatically adjusts your fertilization program according to the analysis in the soil. Now we control the soil. What about the plant? If we can vision exactly what's happening in the plant in a very easy way. This is a startup company, now part of Haifa Group. It's called CropTune. We developed an app. I think you have it also in your bags, this thing. And it's just by a smartphone. It's like a nitrogen sensor, but just taking a picture, you can see exactly what's the nitrogen content in your plant. Well, it was better if it was volume, but I'll explain how it works. Okay, so I'll just explain. So this technology in this smartphone, you can take a picture and there is a very AI smart algorithm inside that knows to analyze the exact nitrogen percentage in the plant. But nitrogen percentage, it doesn't mean anything for a lot of farmers, okay? They want to do, what they can do with this number. So this app knows to take this number and to adjust your fertilization plan, and gives you also recommendations what fertilizers you should use in order to adjust and get better results. What about understanding if the plant is in stress? This is a company in the agriculture university in Israel who developed a biosensor that you can put into plants, and by visioning this plant, you can see if it's now in a stress condition. You can see that by this biosensor, you can see if the plant now is in low stress, good condition, or very high stress. And now they're working on a technique how to analyze this in the field. That you could take a picture and see the areas that your plants are stressed, and then you can react accordingly before you get the damage. While taking the picture, if the picture would be taken manually, I just want to understand this. Like, what is the this is something they are working on. It's not yet available. Yeah. Mm-hmm. But what's the shiny part below? This one? Yeah. No. Oh, this is what? This is water going around. Yeah. Okay. So there's no mulching on it. No. And no, this is only the representative picture. Correct. And what's the pink part? What is the pink part? Stress part. This one? Yeah. This means this plant is stressed. Stress. Yeah. Okay. So stress due to what? Water is sufficient? Oxidative stress. Oxidative stress. Yeah. What this sensor knows to do is to it knows to measure the oxidative stress of the plants. When the plant is in stress, he accumulates a lot of reactive oxygen. Okay. Please explain oxidative stress. We are not exactly getting. Okay. So the oxidative stress. So okay. What is the meaning exactly? When plant
has, let's say, an example. When there is a high intensity, okay, of the, let's say, we go up to, the sun intensity is very high in the greenhouse, okay? So the plant, he does photosynthesis, but the system can't manage all this light. So the plant starts to create this oxidative reactive oxygen, okay? This is not O2, this is O2, not CO2, O2, and this is very harmful for plants. And when this accumulates in the plant, you have all kinds of damaged tissues and all kinds of damaged roots, okay? So you are talking about the nascent oxygen. O, you are saying not O2, it's O. No, in terms of chemicals, oxidation is happening. Oxidation is the only normal process of decay. So here it may be happening due to many other organic nutrients within the plant which is not able to cope up. Okay, so there's a disbalance in the whole of the plant. This way of sensing, it gives us a good sense of what the plant is feeling. When the oxidative stress is very high, we know the plant is not good condition, and so we need to understand how to react. So if we can control all parameters with the plants, why not to grow in much higher density? Why not to grow it vertical? Usually when we talk about vertical farming, we're talking about leafy vegetables, we talk about strawberries. What about cucumber? What about tomato? What about pepper? This company decided to try and growing vegetables that usually you grow in greenhouses and vertical farming. Okay, so what they do, they grow these vegetables in a very dense way. In a vertical farming, they develop their own technique. This is not this is not kilogram per square meter. They get 10 to 20 more yield. For sure, they need to invest much more, but they get much more yield out of this technique. This is just a new technology starting to come, and I know they're working. They're starting to go worldwide and start advancing this technology. Does this mean it's organic planting? Yes. Huh? What do you mean? Is it organic? No, it's totally inorganic. Totally inorganic. Because it is done in rock wool. You have seen the substrate. Yeah. So it is the substrate itself is inorganic. What, according to no, international standards, it's no, organic planting, you will not get that rate. No. No, so they use fertilizers. They don't use, because this is a closed environment, they don't use any plant protections. But fertilizers they use here because they cannot use any organic fertilizers inside in order to achieve these results. Okay? But it would not have any pesticide or insecticide residue, right? Yeah. So it is safer but not organic. Yeah. But the quality would still be equivalent. Very nice. Or probably better. Better. In organic farming, you will not get that quality which you get in organic farming. Only problem when we understand when we are doing a protected cultivation, this is very good, you raise the point, that we can produce the safer produce, but it is not organic. In organic cultivation, you will not get to the level where the output is. And if you go and pick very nice kind of an organic produce, it's not possible. The uniformity and everything what we get in the inorganic produce, it is not there in the organic, because some other nutrient will always be deficient in the organic farming. So if you want to consume something organic, which is not grown with the give about pesticide, that is different, but fertilizer, then you will not get that uniform food quality and all these things. You need to compromise on the quality and look and feel of the product. So that is why. But whatever in India which is going in an organic way, there is a big doubt. Is it really organic or not? But that is another way. We will discuss it another topic and another. But the taste will be very, very nice, because there is a technology developed that you infuse artificial CO2, you do all the things very balanced in all the nutrition. So taste can be enhanced with with many of the parameters, right? So addition of some another nutrient, some silica, some beneficial nutrient, and you can enhance the taste. Even taste can be enhanced with the stress also, because it's the
plant's reaction. So that can also be managed. So when you are having into an artificial environment, you are learning about the taste enhancement and all these things can be done and it can be controlled. When if you are in outside, you don't have a control. Like what he was saying, that if there is a temperature fluctuation and if there is a critical temperature CO2 and light is required to get that particular flavor or sugar content into the fruit, it is possible when it is under control. It is not possible when it is in open, right? Another big issue is the labor problem. And this is just something technologies are starting to coming out, mostly, and I'll say in Northwestern Europe, where they have a lot of labor problems. They developed this nice robot. You can see that you can choose what kind of ripeness you want for the fruit, and he knows to pick by sensing. He knows to pick the exact ripeness of the fruit, and he does it for 24/7. Okay, he doesn't need any day offs and stuff like that. So these are all technologies, but also when you look at compounds and fertilizers, also there we have some innovation, okay? It's not technology innovation, but it's compounds innovation. And here I just gave a few examples. One is polyphosphate fertilizer. Polyphosphate, it's a chain of phosphates, okay? Phosphate, a lot of time we have very high amounts in the soil, but a lot of it is not available due to pH, due to the type of soil. And by using just polyphosphate fertilizers, we make the phosphate much more available. There are some very good products in the market, and we in Haifa have one of them. Another product is the Haifa Soluble Duo, calcium. Calcium is very important for plants, especially during fruiting time. But during fruiting time, we don't want a lot of nitrogen, okay? We want to steer the plant to generative state. But the problem is when you use calcium nitrate, we have calcium but a lot of nitrate inside. How we can solve this problem? And we have a product that has a lot of calcium without almost nitrogen inside. And another thing is potassium nitrate, fertilizer with very low pH to help your stock solution to be much more acidified and have a better dissolution in your stock solution. So this is just a few examples, and we have many more. And if we take all of these parameters together, we can plan better and manage better, and at the end, we can know how to fertilize our plant better. So you say all of these technologies, okay, this is nice for Europe, but what about India, okay? Is this relevant for India? I want to give a case study that we did in Israel. Very extreme condition in the desert of Israel, the southern of Israel, very high temperature. You can see this is even, I think, during winter time, it can rise. After a little bit during springtime, it rises up even almost to 42 Celsius. And we were thinking with the farmers how we can increase their yield in this type of conditions, and we're thinking, maybe, okay, fertilizer we have, sun we have, what about CO2? If we enrich the greenhouse in CO2, maybe we'll have better results. But the problem is it's so hot, you cannot keep the greenhouse closed, right? So how you can enrich CO2 when you open the greenhouse, everything comes to a steady level of the ambient level of CO2 in the atmosphere. So we were thinking, maybe we can enrich in windows, okay? So we decided that we'll initiate enriching with CO2 when the light intensity reaches around 110 micromoles. This is early in the morning, and temperature are lower than 30. Then we can close the greenhouse and enrich with CO2. When it gets really hot, over 30, then we need to open the greenhouse to ventilate, and then in the afternoon we can enrich again when temperatures decrease. Here you can see how it looks. So you can see that 6 a.m. in the morning, we start the enrichment into green. And when it gets the temperature raised, we stop the enrichment until the afternoon and enrich again. What we call enrichment in windows. This is how a very simple greenhouse in the desert of Israel. These are tomatoes.
This you can see how was the control looking in the enriched CO2 greenhouse. Look, very simple greenhouses just by enriching CO2. We increased the yield in 20% and the revenue by 23%. This isn't tomato. But when we increased the CO2, suddenly the CO2 wasn't the limit. You can see that by just increasing also the nutrition to 150%, we got better results. So you always need to think what limits the plant. So when we control the CO2, now we could increase the fertilizers. What is that yield metric ton for? Metric ton per dunam. Dunam is acre is 4 dunam. Okay. This is a unit we use in Israel. So what we were saying is there is an increase in output of 20 metric tons per acre. So if I look at the last slide, plus 19.77. this is an increase in 19%, 20%. Yeah. So To control, without enrichment. to control. Yeah. So I mean, just number-wise, to get a commercial sense, tomatoes, what would the yield, what would the output be of 1 acre? So if this is this we are talking about 10, we are talking about 90% increase. this is like 40, I mean around 45 maybe tons per acre. 45 tons per acre. Yeah. So everything done perfectly, I can get 45 tons per acre. In this type of practice of enrichment, this is practices we're doing now because we were thinking, okay, we are when we manufacture fertilizers, a lot of time the byproduct is CO2. We can take this CO2 and we can enrich our polyhouses and not and use it again. And look at the revenue. Revenue for the farmer is over 23%, but this is a tomato. We tried it also in cucumber. We were thinking maybe this is crop dependent. Did it in cucumber. Same results. Increase in 22% when we enriched just in windows, not the whole day. You know, in Dutch greenhouses, they keep it around 800 to 1,000 ppm CO2 all day long. This is, we're just increasing in 2 windows. So this 22% and revenue, almost 30%. So just thinking out of the box. ये एक अच्छा टॉपिक है। अभिषेक जी बता रहे थे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझा दूं सबको अंडरस्टैंडिंग के लिए। I just take a moment, I will speak in Hindi to them. So can you go back? So सबसे पहले सर का क्वेश्चन था कि CO2 एनरिचमेंट क्या होता है। देखिए, आप अगर नीदरलैंड में जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी बहुत होती है, तो इसलिए पूरे ग्लास हाउस होते हैं, नॉट लाइक पॉली हाउस, दे आर ग्लास हाउस। आप इमेजिन करो कि एक ग्लास कंटेनर या ग्लास हाउस में क्रॉप ग्रो कर रहे हो। फोटोसिंथेसिस होता है, सबको पता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लिया जाता है, आपका जो क्लोरोफिल होता है वो उसको प्रोसेस करता है, शुगर बनाता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। अपने को मालूम है कि बचपन में अपन बताते थे कि रात को झाड़ के नीचे नहीं सोना है, दिन में सोना है। रात में क्यों नहीं सोना है? रात में वो CO2 ये करता है, प्लांट जब वो रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, CO2 बाहर छोड़ता है। जब फोटोसिंथेसिस करता है वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक क्लोज पॉली हाउस है और उसमें लाइट आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसके बाद उसमें क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। जब पूरा आपका ग्रीन हाउस ऑक्सीजन से भर जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा क्या? क्योंकि CO2 चाहिए। CO2 ये एक उसका एक इनपुट है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एक इनपुट है। क्लोज स्ट्रक्चर में अगर आप उसको CO2 नहीं डालोगे तो पूरा ऑक्सीजन इनरिच हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। तो उसको इसलिए वो ग्रीन हाउस वाले क्या करते हैं, जो ग्लास हाउस में CO2 डालते हैं। तो नॉर्मल अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और 0.3% CO2 होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पोल्यूशन ज्यादा होता है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, जैसे दिल्ली वैली में बोलते हैं कि ज्यादा होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, जब वो CO2 है, वो 300 ppm CO2 है, उसको 800 तक लेके जाएंगे
तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो सर ने दिखाया था 121 kg पर मीटर स्क्वायर, जो कि 500 टन पर एकड़ होता है, 500 टन पर एकड़, तो वो आने के लिए वो उसमें CO2 इन्फ्यूज करते हैं। तो अभी ये सर ने जो बताया कि आप ये क्लोज ग्रीन हाउस में तो करते हैं CO2 इन्फ्यूजमेंट, करना जरूरी है, नहीं तो यील्ड ही नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिच बनेगा, इसलिए वो करते हैं। अब CO2 कैसे जनरेट करते हैं, डिफरेंट वेज है। एक होता है कि जो गैस बर्न होता है, जैसे अपन चूल्हा जलाते हैं उसके बाद उसमें से धुआं निकलते हैं, वो CO2 है, ठीक है ना। तब जब वो क्या करते हैं, हीटिंग के लिए जब गैस बर्न करते हैं, तो वो हीटिंग के बाद गैस बर्न होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कोई भी ईंधन से जो धुआं निकलता है वो CO2 इन्फ्यूजमेंट है, उसको फिल्टर करके वो CO2 इन्फ्यूजमेंट कर देते हैं डच ग्रीन हाउसेस में। वो हीटिंग के लिए जो गैस बर्न करते हैं उसी में से CO2 इन्फ्यूज करते हैं, और लेवल कितना मेंटेन करते हैं, 400 से 800 ppm। अब ये हो गया डच ग्रीन हाउस में, जहां पे ठंडी है CO2 डलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जहां पे अपन तो क्लोज पॉलीहाउस नहीं यूज करते हैं। अगर आप क्लोज पॉलीहाउस यूज करेंगे 400 डिग्री से 40-45 डिग्री तक आपका टेम्परेचर जब जाता है, तो क्लोज पॉलीहाउस तो आप ग्लास हाउस तो नहीं यूज कर सकते हो। तो या ग्लास हाउस यूज करेंगे तो उसको उतना कूलिंग करना पड़ेगा जितनी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपन वेंट्स ओपन कर देते हैं, और वेंट्स ओपन करने से नया एयर पास होता है और टेम्परेचर कूल डाउन होता है। तो उसमें CO2 इन्फ्रिजमेंट करोगे आप, तो जो अगर आप CO2 डाल दिया तो CO2 खुद टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है, वो और नमी और गर्मी शोषेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सर ने जो एक्सपेरिमेंट बताया है, कैन यू गो बैक टू द ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। तो वो क्या किया है उन्होंने, विंडोज में, यानी मॉर्निंग में जैसा सनलाइट आता है उस टाइप, फर्स्ट विंडो ऑफ CO2 इन्फ्यूजन, यस दिस। तो उन्होंने क्या किया है, जब धूप निकलती है, जब सूरज निकलता है, उस टाइम पे CO2 का इनरिचमेंट किया है। और यहाँ पे जो CO2 दिख रहा है, गो टू द सेकंड स्लाइड, वो CO2 आप बोलेंगे कि CO2 कैसे डालते हैं। अगर आप डच ग्रीन हाउस में जाएंगे और यहाँ पे भी जो दिखा रहा है, एक ट्यूब रहता है, ट्यूब यानी बड़ा ये नहीं है, एक अपना पॉलीथीन का पन्नी रहता है ना, वैसा एक पॉलीथीन का ट्यूब रहता है, और उसको बारीक बारीक होल रहते हैं। तो जिसमें ऐसा गैस भरना चालू हो जाता है तो वो फूल जाता है, और फूल जाने के बाद वो बारीक बारीक जो छेद रहते हैं उसमें से CO2 आके वो पौधे के अराउंड, और आपको CO2 कहाँ चाहिए, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी पौधे के अराउंड। तो जैसे आपकी ड्रिप लाइन रहती है, कैन यू गो टू द पाइप वेयर द CO2 इज इन्फ्यूज्ड, ये ऐसा पाइप होता है, पाइप यानी पन्नी है, सिर्फ एकदम थिन पॉलीथीन का पन्नी होता है, और इसको माइक्रो होल्स रहते हैं। तो उसमें से जब उसमें CO2 जाता है तो वो पन्नी में से CO2 निकलता है, और वो झाड़ों के अराउंड यहाँ पे घूमता है, और यहाँ से CO2 इनरिच एनवायरनमेंट बनने से फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। फिर उन्होंने देखा है कि सिर्फ CO2 बढ़ाने से काम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन उसका ये होता है, जिसको लॉ ऑफ मिनिमम बोलते हैं, अगले प्रेजेंटेशंस में आएगा। तो एक चीज आप ऑप्टिमम लेवल पे डालने के बाद प्लांट को दूसरी चीज लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, तो इसलिए न्यूट्रिशन लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन उन्होंने बढ़ाया, और उसमें नंबर एब्सोल्यूट छोड़ दीजिए आप। एक्सपेरिमेंट क्या है कि 20% तक यील्ड इंप्रूवमेंट हो सकता है सिर्फ विंडो में CO2 इन्फ्यूज करेंगे, वो भी ओपन पॉलीहाउस में। लीव अबाउट ये, तो आपका अगर यील्ड 55 टन है यहाँ पे, तो उस पर आप यू कैन एक्सपेक्ट with good fertigation, good nutrition और CO2 इम्प्रूवमेंट increase by 20%। ये वो डाटा किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। होप क्लियर है, थैंक यू। मतलब 1 एकड़ में 900 ppm मान लो, नहीं हाँ 900 ppm मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सुबह शाम को जैसे ये ग्राफ में सबसेट करके किया। 1 एकड़ में ये तो एवरीडे करने का रहेगा ना। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस टोमेटो क्रॉप का साइकिल भी 90 दिन होगा या 120 दिन जो कुछ भी होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, ये सब कुछ कैलकुलेशंस करके अपन बता सकते हैं। बट ये जो है, क्योंकि उसमें वैल्यूमेट्री और मेजरमेंट से आएगा, आपका पॉलीहाउस कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, पॉली टनल में कर रहे हो, ओपन वेंटिलेटर में कर रहे हो, 4.5 मीटर का
गटर हाइट है 5.5 मीटर का है, क्योंकि ये सब कुछ वॉल्यूम में होता है, बट इट इज़ वेरी डूएबल कैलकुलेशन. We can do it and do it. Secondly, my only say is that when you start generating the CO2, there are sensors available. या 600 या 900. इधर तो CO2 जनरेटर आपका काम करते रहेगा, जो कुछ है बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, या आपके वुड बर्निंग से हो सकता है, या आपके क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग से भी CO2 आपको मिल सकता है, तो वो तो आपके लिए फ्री है. तो उसके बाद जब इन्फ्यूजन चालू होगा तो आपको जहाँ पे लेवल चाहिए वहाँ पे सेंसर्स लगे रहेंगे, और वो तब करेगा जब आपका CO2 लेवल लिमिट नीचे आ जाएगा, वो फैन क्विक ऑफ होगा, CO2 इन्फ्यूजमेंट चालू हो जाएगा. जब आपको नहीं चाहिए, दोपहर हो गई, वो स्टॉप करेगा, जनरेटर भी स्टॉप करेगा, इन्फ्यूजमेंट भी स्टॉप करेगा. सर हम लाइमस्टोन से भी डिराइव कर सकते हैं काम से. लाइमस्टोन के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा केमिकल्स लगेगा, क्योंकि यू नीड एन एसिड टू न्यूट्रलाइज लाइमस्टोन, एंड देन यू नीड एन एसिड एंड यू लाइमस्टोन एंड कंटिन्यूअस, एंड यू विल आल्सो नीड टू डील विद the byproduct. So it is better to burn something, and normally it is done. And here what they are saying, यहाँ पे जो कर रहे हैं, वो हाइफा ने खुद के ग्रीन हाउस पे जो एक्सपेरिमेंट्स है, वहाँ पे हाइफा की जो फैक्ट्री है, वहाँ से जो CO2 बाई प्रोडक्ट आता है, उसको इन्फ्यूज करके उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. तो ऐसा कोई इंडस्ट्री जो है आपके पास अगर है, आजू बाजू में है, जहाँ पे CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी फर्नेस जलेगा तो CO2 निकलेगा, तो उसको आप थोड़ा सा ये डाइवर्ट कर सकते हैं. इसमें आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी जो कार्बन न्यूट्रल ये है, और उसके बाद उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन क्रेडिट है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड. बस वी सी नीड टू सी दैट if this experiment can be done, और इसमें से अपने को क्या अचीव हो सकता है. हाँ सर. हाइफा मतलब वही ना जो हाइफा इंडिया बात कर रहा है, हाइफा में हम लोग पोर्ट बनाएंगे. हाइफा इज अ गुड क्वेश्चन. हाइफा इज द पोर्ट जो अदानी साहब ने लिया हुआ है. हाइफा ये हमारा जो कंपनी है हाइफा, ये वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, उसके लिए उसका नाम पड़ा है हाइफा. लेकिन हाइफा जब हम बोलेंगे तो एक तो पोर्ट सिटी है, और दूसरा एक है हाइफा एज अ कंपनी. तो ये जो कंपनी है वो 60 इयर्स एगो हाइफा पोर्ट में चालू हुआ था, तो उसने वो कंपनी को नाम हाइफा दिया है. लेकिन हाइफा एंड हाइफा कंपनी, हाइफा फर्टिलाइजर्स which we are representing is one, and Haifa as a city, as a port which Mr. Adani has invested is a different. तो ये हाइफा कंपनी इनका कहाँ पे है इजराइल में? हाइफा में हाइफा पोर्ट अलग हो गया. हाइफा कंट्री है. आजकल तारीख में इनका हेडक्वार्टर्स है. Just one. जो the CO2 आप जो बता रहे हैं ना, I'll give you an experience of mine on. हाँ, great sir. We have a boiler. Oh, okay. We use crop residual to burn it, हाँ. and we use the hot water. Great. Now right next to it there is a potato field. Okay. Now we observe that when we are burning that and the smoke is going on that direction, on that area, that 20 meter by about 30 meter, we had the yield is higher than the other. Great. That's very nice. So this is what the validation of this one is. So very good. And only thing is that we need to check that when there is a smoke, there is a lot of particulate matter, Yes. right? Yeah. So if you have something which will filter out the particulate matter through the water spraying or something, and the enriched CO2 goes to the field, you will get better. Great. So sorry, we need to move to the another topic. So just a few slides. So just a perspective in trends of what we are as Haifa Group looking in terms of innovation. If we look 5 to 10 years ahead, in terms of we're looking in a few segments, parts that we look to develop. One is the compounds, innovative sensing technologies, digital assets for fertilization management, and today I will show you one of them, the Nutrinet, and technologies. And just a peek of what we're working on. We're working on biodegradable chelated microelements. We work on different microorganisms to improve nutrient uptake. We're screening a lot of new biostimulants to develop new biostimulants. We are looking into the carbon market. Okay, a lot of today farmers the regulation starts in Europe. You can make money just by saving carbon. Okay, carbon credit.
and CO2 enrichment, as we talked. All kinds of sensing technologies that we are developing with different institutions for stress, soil, and this is for substrate, and different digital assets that we developed, all of them actually free of charge for farmers to use, where we bring our knowledge. One expert is for fertigation, one is for foliar nutrition, the other one is for controlled release fertilizers, and this is a nitrogen sensor of the plant. Well, thank you very much. Thank you, Aviel, for a very nice presentation. So, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए था टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में चल क्या रहा है. बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो सकता है तुरंत रेलेवेंट ना हो, लेकिन एक चीज़ सीखने को मिला होगा, CO2 एनरिचमेंट हम में से कोई भी नहीं करता है. अगर हमारा प्रोडक्शन 20%, 30%, समटाइम्स 40-50% में बढ़ जाए, तो आप जस्ट इमेजिन करो कितने कम कॉस्ट में एक जुगाड़ सिस्टम बना के, जहाँ पे प्लास्टिक की पाइप्स में होल्स हैं, उसमें अगर आप CO2 डालो तो आपका प्रोडक्शन अगर कैप्सिकम में 35 टन आ रहा है, 30 टन से 25 टन आ रहा है, अगर वो 10 टन भी बढ़ जाता है तो उस जुगाड़ से यू आर मेकिंग 10 लाख एक्स्ट्रा. तो ये चीज़ सीखने को मिली. अभी कैसे डिटेल में होता है, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन लोग बहुत जल्दी करेंगे जिन भी फार्मर्स के यहाँ पे हम कर सकें, और उसका आप लोग को रिजल्ट हम लोग बहुत जल्द देंगे. अब अगला प्रेजेंटेशन हमारे पीयूष सर का है. पीयूष सर, आपका टॉपिक जो सर ने बनाया है, कॉमन मिस्टेक ग्रोअर मेक इन फर्टिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सब लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं. दिन भर में 100 बार पीयूष सर वो बात बताते भी हैं, लेकिन वो बताने के बाद भी गलतियां करते हैं. आज फिर से हम सीखेंगे, ट्राई करेंगे कि जो एक ऐसी लर्निंग है आप लोग के पास हमेशा के लिए हो जाए.